Hello students, I welcome you to the platform of StudyIQ. आजिर क्लास रे मु डिस्कशन करुछि ए वर्ष OPSC सिविल सर्विस रो रिटन एग्जाम जोटा आजि थिला अर्थात आजि कहले 20 तारिख आजि इंग्लिश एसे पेपर थिला रिटन परीक्षार सेथरे जो 5टा एसे पढिछि से इंग्लिश एसे पेपर मु वर्तमान आजिर क्लास रे डिस्कशन करुछि पिला माने मु तम मानकु ए वर्ष 12टा प्रोबेबल एसे ओएस परीक्षा लगी देइथली एवं आजिर जो परीक्षा सरला से परीक्षा रे 5टा एसे पढ़ी मु तुमको देइथिया प्रोबेबल क्वेश्चन भितरु जो 5टा क्वेश्चन आसीची ए 5टा को 12टा क्वेश्चन भितर मोर थिला से क्वेश्चन गुडा मु कहि दउची तापर डिस्कशन करिबा ए क्वेश्चन ना आंसर कोन हबो पिला माने देख आजिर परीक्षा जो हला रिटन परीक्षा इंग्लिश एसे को नहीं के फास्ट सेटिंग रे थिला सेठी 5टा क्वेश्चन पढ़ी गोटे क्वेश्चन हला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए टूल फॉर एम्पावरमेंट और ए थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी एटा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हला एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इंडिया स्ट्राइक ए बैलेंस थर्ड क्वेश्चन हला the impact of digital payment on India's economy. Fourth question hela education for the 21st century, rote learning versus critical thinking. एवं फिफ्थ क्वेश्चन आजिर ओएस परीक्षा रे जहाँ पढ़ी सेटा होची प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन। ए 5टा क्वेश्चन पढ़ी मु तम मानकु ए वर्ष मोर से जो ग्रुप अच्छी टेलीग्राम ग्रुप जार ना होची थिंक सिविल सर्विस थिंक सरोज सामल सार से ग्रुप रे 7 मार्च 2025 रे अर्थात पाखापाखी 1.5 मास तले मु 12टा प्रोबेबल क्वेश्चन देइथली ए जो 5टा क्वेश्चन आज ओएस परीक्षा रे पढ़ी से 12टारू ए 5टा क्वेश्चन पढ़ी एवं एथरो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एटा ऑलरेडी स्टडी आईक्यू रो ओपीएससी चैनल रे इंग्लिश एसे कॉन्टेक्स्ट रे पार्ट 3 पार्ट 4 करिकि मो डिस्कशन करिछि एवं ओपीएससी रो क्वेश्चन नंबर 1 मोर स्टडी आईक्यू रो यूट्यूब चैनल रे इंग्लिश एसे पार्ट 3 बोली कि मो जोटा को लिखिछि सेटा आजिर फर्स्ट क्वेश्चन एवं ओपीएससी इंग्लिश एसे कॉन्टेक्स्ट रे मोर जोटा पार्ट 4 इंग्लिश एसे को नहीं कि सेटा आज ओपीएससी परीक्षा रे सेकंड क्वेश्चन हिसाब रे पढ़ी मु देखै दउची तुम माने देखि परिबो। फॉर एग्जांपल एठी देख यूट्यूब को जीव ओपीएससी स्टडी आईक्यू रो ओपीएससी चैनल यूट्यूब को जीव प्ले लिस्ट रे देख ऑलरेडी एठी अछि OPSC OCS Mains 2023 Master the Art of Essay Writing एठी एटा हला पार्ट 4 पार्ट 3 एटा होची OPSC OCS Mains 2023 Master the Art of Essay Writing एटा ही पार्ट 3 देखा एठी मो लिखिछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मु डिस्कशन करथिली सेटा पढ़ी आज फर्स्ट क्वेश्चन हिसाब रे घरे तुम मैंने देखि पारिबो। बर्तमान आस नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन होची पार्ट 4 हिसाब रे ए क्वेश्चन ऑलरेडी मु स्टडी आईक्यू तरफ रो हमर यूट्यूब चैनल रे डिस्कशन करि सारछि एवं आज ये जो पार्ट 4 हिसाब रे मो जोटा डिस्कशन करथली आज परीक्षा रे सेटा सेकंड क्वेश्चन हिसाब रे पढ़ी तेनो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दीटाक मु आमर यूट्यूब चैनल रे डिस्कशन करिछि तापर पढ़ी किंतु थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो गुड़ा मु प्रोबेबल टॉपिक देइथिली ताधरु आछि बर्तमान तेनो से हिसाब रे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मोर आज डिस्कशन करिवार नाही बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड ए डिस्कशन अबाउट इट इन आवर यूट्यूब चैनल तेनो एटा सरी जाइछि डिस्कशन। बर्तमान थर्ड क्वेश्चन की आस थर्ड क्वेश्चन कौन कहूची थर्ड क्वेश्चन कहूची द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट
on India's economy. पिला माने ए क्वेश्चन रो आंसर केमिति लिखिबो इंग्लिश एसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू जेतबळे इंग्लिश एसे तमे लिखुच इंग्लिश एसे रे तीनटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट रहिबो गोटे होची इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट होची बॉडी थर्ड पार्ट होची कंक्लूजन इंट्रोडक्शन अर्थ होची ओपनिंग ऑफ द टॉपिक बॉडी रो अर्थ होची एक्सपांडिंग द थॉट बॉडी भितर तमर रहिबो बैकग्राउंड रहिबो व्हाट एस्पेक्ट व्हाई एस्पेक्ट हाउ एस्पेक्ट ए सब जिनस रहिबो ता संगे पर्सपेक्टिव रहिबो ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन मु करिछि यूट्यूब रे तापरे लास्ट पार्ट हला कंक्लूजन कंक्लूजन अर्थ होछि वाइंडिंग ऑफ द टॉपिक कंक्लूजन टाको गोटे ऑप्टिमिस्टिक नोट रे गोटे होपफुलनेस अप्रोच अडॉप्ट करिकि कंक्लूजन टाको तुमको कंक्लूड करिया पई पड़िबो तेनो मु ऑलरेडी कहिछि टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश एसे सेठी मु कहिछि इंग्लिश एसे को केमिति लिखा जाई परिबो इंट्रोडक्शन को केमिति अट्रैक्टिव करा जिवो विभिन्न स्ट्रेटजी मु कहिछि इंट्रोडक्शन टाको गोटे कपलेट ऑफ पोएम रे लिखि हबो गोटे कोटेशन रे लिखि हबो गोटे शॉर्ट स्टोरी रे लिखि हबो एवं यूजुअली मु प्रिफर करे शॉर्ट स्टोरी माध्यम रे इंट्रोडक्शन को लिखिया पई एथि पई कारण स्टोरी शुणिया पई समस्त को भल लगे स्टोरी पढ़िया पई समस्त को भल लगे से हिसाब रे आज जो थर्ड क्वेश्चन पढ़ी तार इंट्रोडक्शन को आस थर्ड क्वेश्चन कहूची इंपैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन इंडियास इकोनॉमी तेना पिला माने एथरे आसीबो देख आगे इंट्रोडक्शन को पळे आस गोटे शॉर्ट स्टोरी माध्यम रे मु इंट्रोडक्शन आरंभ करिछि एठी अछि एया इट वाज ए हॉट समर आफ्टरनून इन ए स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश गोपाल ए वेजिटेबल वेंडर wiped the sweat from his forehead as he handed over a bag of fresh tomatoes to a customer. The young man took out his phone and asked, "Paytm hai?" Gopal smiled and nodded. With a quick scan and a beep, the transaction was done. No need for change, no delay. Gopal, who once struggled to handle cash and keep records, now ran his small business more smoothly than ever. He had stepped into digital world without leaving his roadside stalls. पिला माने बुझी होची एठे एतिकरे इंट्रोडक्शन मु लिखि देली स्टोरी टेलिंग मैनर रे एठी मु कहिची बुझेइची टॉपिक टाको जस्टिफाई करिची दिस लिटिल स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ए मच लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग अक्रॉस इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम have become an essential part of everyday's life, bringing ease, speed, and transparency to transaction across all levels of society, from small shopkeepers to large corporations, from urban metros to remote villages. The impact of digital payments on India's economy is both deep and wide. पिलामाने दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन केमिति उत्तर प्रदेश रो गोटे छोटिया गाँव रे गोपाल बोलिकी गोटे स्ट्रीट वेंडर डिजिटल पेमेंट माध्यम रे सब जिनस एक्सेप्ट करूची कस्टमर माने केमिति जहाँ से बिकुची वेजिटेबल से माने केमिति डिजिटल पेमेंट करछन्ते एवं गोटे समय गोपाल स्ट्रगल करूथला रेकॉर्ड रखिया पई एवं चेंज रखिया पई ता पाखरे चेंज सफिशिएंट रहु नथला किंतु वर्तमान डिजिटल पेमेंट माध्यम रे कोनोसी चेंज रो आवश्यकता नाही रेकॉर्ड रखिबार आवश्यकता नाही कारण एवरीथिंग इज रेकॉर्डेड डिजिटली एमतिया गोटे स्टोरी माध्यम रे मु बुझेइची सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट तापरे तर इवोल्यूशन कथा मु कहिची डिजिटल पेमेंट इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया रे केमिति इवॉल्व कला डिजिटल पेमेंट देख पिला माने एठी सेनु एटा गला इंट्रोडक्शन बर्तन बॉडी पार्ट रे हमें कहले इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया एठी मु लिखिची केमिति इंडिया रे डिजिटल पेमेंट आसिला कोन कोन हला एठी से जिंस गुडा सब लिखा हैची द जर्नी ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया began slowly but things changed
drastically and dramatically with the advent of smartphones and widespread internet connectivity or access. The launch of platforms like Paytm, PhonePe, and Google Pay made cashless transaction easier and more accessible. However, the biggest turning point came in 2016. पिलामान 2016 ने कौन हितला जानी चाहता? Demonetization. 2016 with the government's demonetization move, which pushed the public and businesses to explore non-cash option. Following this, the introduction of Unified Payment Interface UPI by the National Payment Corporation of India NPCI revolutionized the landscape. UPI allowed users to transfer money instantly using mobile phones, linking their bank account directly. It was simple, secure, and free. It quickly gained popularity as of 2024. The UPI at 2025 कर दियो, आज का दिन को कर दियो 2025, mistakenly 24 है. As of 2025, UPI has become one of the most used digital platform method in our country. बुझे होची evolution एमिति हला. तापरे benefit to economy कैन से पचारची डिजिटल पेमेंट इट्स इंपैक्ट अपन इंडियन इकोनॉमी. बेनिफिट टू इकोनॉमी, इकोनॉमी रे कौन कौन बेनिफिट है पिला माने मु ऑलरेडी लिखी देछि क्वेश्चन ना आंसर. डिजिटल पेमेंट हैज प्लेड ए क्रुशियल रोल in strengthening India's economy in several ways. कौन फास्ट रे कहूची फाइनेंशियल इंक्लूजन. One of the major achievement of digital payment is that they have brought millions of people into the formal financial system. People in remote and rural villages areas who previously had no access to banking services can now receive money, pay bills, and save digitally. Government welfare schemes and subsidies now reach beneficiaries directly into their bank account through direct benefit transfer, that is DBT, reducing leakage and corruption. Second asla growth of small and medium enterprises. It is second, growth of small and medium enterprises. Small businesses like XYZ have benefited immensely. कौन सी तुम लिखिब शॉपकीपर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, हला फुटपाथ रे बसिक बिक्री करथिया लोक हो. डिजिटल पेमेंट हैव अलाउड देम टू एक्सपांड देयर कस्टमर बेस एंड इंप्रूव देयर कैश फ्लो. there is no longer need to worry about handling physical cash or fake currency. Fake currency रो कौन सी द्वारा एमन अफेक्टेड हेबेनी कैन एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड डिजिटली. It has also made it easier for those businesses to maintain digital records, helping them access loans, credits from banks and fintech companies. Fintech means financial technology. Third, increased transparency and reduced black money. डिजिटल पेमेंट ले ब्लैक मनी रिड्यूस हम, ट्रांसपेरेंसी बढ़िबो. बुझी होची एटा भी मु लिखि देइछि, तुम देखि नबो. डिजिटल ट्रांजैक्शन लीव ए ट्रायल. दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स रिड्यूस टैक्स इन्वेजन and the circulation of black money. More businesses are now registered and more income is declared, which increases government's tax revenues. This money can then be reinvested into infrastructure, healthcare and education. Fourth point asla convenience and time saving. एथे सुविधा होची, लोकंकर टाइम सेव होची. बैंक रे पैसा उठेया पाई, एटीएम रे पैसा उठेया पाई जीवा पाई पड़ू नहीं, समय नष्ट हो नहीं. एक कथा मु लिखिछि. नेक्स्ट रे encouragement to innovation and startup.
इनोवेशन आउ स्टार्टअप को भी एटा कौन करुछि एनकरेज करूछि। लिखित सेटा द राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ओपन डोर फॉर इनोवेशन। इंडिया इज नाउ home to a thriving fintech ecosystem. Startups are creating new apps, wallets, and payment systems, offering job and contributing to GDP growth. बर्तमान एगुड़ा सब आसीगला आमर अपॉर्चुनिटी बा बेनिफिट्स पुणी ऑब्वियसली यार चैलेंजेस अच्छी जेकोसी नुआ जिनस आसीबो एनी न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी brings lots of opportunity for a society and at the same time it also brings lots of unwanted challenges. तेणु opportunity कथा आम डिस्कसन करदे बर्तमान चैलेंजेस कथा आस कौन कौन चैलेंजेस साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ए जिनस होची ऑलरेडी मु लिखी साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड। नेक्स्ट होची डिजिटल डिवाइड माने सबू लोक रूरल एरिया रे इंटरनेट स्लो अर्बन एरिया रे इंटरनेट फास्ट रूरल एरिया रे लोकंकर डिजिटल लिटरेसी नाही बा कम अच्छी अर्बन एरिया रे डिजिटल लिटरेसी अधिका अच्छी। तेणु डिजिटल डिवाइड जितेबाला अच्छी सेतेबाला कौन होची ना डिजिटल ट्रांजैक्शन ता आम देश रे एते इफेक्टिव हो पारिबा नाही सही कथा मु लिखी। While urban areas have embraced digital payment, rural areas still face issues like low internet connectivity, lack of smartphones, and digital illiteracy. Bridging this gap is essential to ensure that the benefits of a cashless economy reach everyone. तापर नेक्स्ट होची डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी केतोळे जदि फेलुअर हैला इंटरनेट काम कला नहीं से जगह डिले हम ए ग्लिच इन द सिस्टम सर्वर डाउन टाइम और लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन ब्रिंग ट्रांजैक्शंस टू ए हॉल्ट। इंडिया नीड्स रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी विदाउट इंटरप्शन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सपोर्ट गवर्नमेंट कौन करिछि ए डिजिटल ट्रांजैक्शन लगी गवर्नमेंट कौन कौन सब करिछि केमती सपोर्ट करुछि से कथा को आस द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्लेड ए की रोल इन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट। कैंपेन लाइक डिजिटल इंडिया जनधन योजना and the creation of platform like Bhim UPI have laid the foundation for a digital economy. The RBI's regulatory support, investment in digital infrastructure, and encouragement of cashless transactions through incentives have all contributed to fast-paced adoption. In recent years, the government has also focused on introducing digital rupees, a form of central bank digital currency, to further modernize the financial system. आगुको कौन अच्छी रोड अहेड एक कथा को आस India's digital payment revolution is still evolving with the growth of 5G network, artificial intelligence and biometric verification. The future holds even more possibilities. Soon, digital payment will become more personalized, faster and even more secure. However, it is important to maintain a balance while promoting technology. Equal focus must be given to digital literacy, cyber security, awareness and rural inclusion. जो rural area रे इंटरनेट स्पीड कम रहुची लोकंकर टेक्नोलॉजिकल बा डिजिटल लिटरेसी नाही तांको डिजिटली लिटरेट एजुकेटेड करिया पई पड़िबो and rural inclusion. Only then can India truly become a digitally empowered society and economy. Conclusion पिला माने मु कहिछि जनरली मोर कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल हैला इन मैटर ऑफ राइटिंग इंग्लिश एसे टाकू कनक्लूड कला बळे मु कहिछि गोटे ऑप्टिमिस्टिक नोट रे कनक्लूड करिवो गोटे पोएम रे कनक्लूजन टाकू लेखिले आउरी अट्रैक्टिव हबो सेही जिंसटा मु करिछि इठी से जो गोपाल बिकुथला रास्ता कड़े बसिकी सेठू आरंभ करछि कारण आमे इंट्रोडक्शन टा गोपाल पाखुर आरंभ करथिले फ्रॉम ए रोड साइड वेंडर इन ए डस्टी विलेज टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन ग्लास बिल्डिंग्स. Digital payment have changed the way India does business. They have added speed to the transactions, brought transparency to the system. They have added
speed to the transaction, brought transparency to the system, and empowered millions who were once financially excluded. Though challenges remain, India is marching ahead confidently on its journey towards becoming a digital economy. Now it is worthy to wind off the essay with a short poem. সেটা ମୁଁ ଲେଖିଛି short poem ଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ କହୁଛି from hills of Himalayas to Chennai streets digital payments make life sweet. RuPay, UPI, Paytm Glow, India is moving with the flow. Cashless dreams in every hand, cashless dream in every hand, build a smarter, stronger land, that is India. Okay, this is all about the answer of the question number 3. पिला माने क्वेश्चन ए वर्ष अर्थात 2023 मसिया ओएस परीक्षा जोटा चली बर्तमान रिटन एग्जामिनेशन तार इंग्लिश एसे पेपर आज थिला इंग्लिश एसे पेपर रे 5टा इंग्लिश एसे पढ़ी 5टार फास्ट और सेकेंड एसे जोटा ऑलरेडी मु डिस्कशन करी 1.5 मास तले डिस्कशन करथली स्टडी आईक्यू रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म रे ओपीएससी चैनल रे सेथरु 1-2 नंबर एसे पढ़ी 3 नंबर एसे मु डिस्कशन एबे कली आंसर भी तुमको दे देली पीडीएफ फॉर्मेट रे बर्तन 4 नंबर क्वेश्चन के आसो पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन कौन ते देख 4 नंबर क्वेश्चन हला एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी इंडिया रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग पिला माने मु ऑलरेडी तुमको 7 मार्च रे 12टा क्वेश्चन देइथिली प्रोबेबल क्वेश्चंस से 12टा रो ही 5टा क्वेश्चन पढ़ी से गोटे क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड थिला से पचारची एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन 21st सेंचुरी इंडिया रे कौन हबा उचित सेठी मेमोरी उपरे इंपोर्टेंस दिया हबो ना क्रिटिकल थिंकिंग उपरे इंपोर्टेंस दिया हबो ए क्वेश्चन टा एक्चुअली योर एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 संगे लिंक ही की पकेइचे क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 संगे लिंक करके क्वेश्चन पचारची कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्रिटिकल थिंकिंग उपरे इंपोर्टेंस देइची रोट लर्निंग की रिजेक्ट करिची तेनो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिंक करके एजुकेशन पढ़ी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन टा पढ़ी इंग्लिश रे देख आपको भी मुझे लिखी देइची इंट्रोडक्शन से स्टोरी टेलिंग मैनर रे लिखी इंट्रोडक्शन कौन इट वाज द फाइनल राउंड ऑफ ए क्विज कंपटीशन इन ए स्कूल इन दिल्ली द मॉडरेटर आस्क्ड व्हाट वुड यू डू इफ योर सिटी ran out of clean water. 2 students stood up at the podium. One quickly replied with textbook definition of water scarcity and statistics about river. बुझे The other student paused, then thoughtfully explained how they would start a campaign to harvest rainwater, educate neighbors, and reuse wastewater at home. The first answer got applause. समस्त ताली मारले फर्स्ट क्वेश्चन सुनी की फर्स्ट पिलर आंसर सुनी की बुकिश आंसर बट द सेकेंड आंसर अर्नड एडमिरेशन सेकेंड क्वेश्चन की समस्त प्रशंसा कले कारण सेकेंड कैंडिडेट टा निज थॉट को अप्लाई करिकी क्रिटिकल थॉट को अप्लाई करिकी कहिथला फर्स्ट स्टूडेंट टी कोन करिथला ना बही रे जहा पढ़िथला ताको माने रखी कहिथला सेथि पई फर्स्ट स्टूडेंट रो उत्तर सुनी की लोक माने ताली मारला बेलू सेकेंड स्टूडेंट रो उत्तर शुणिकी लोक माने बहुत प्रशंसा कले कहीं व्हाई बिकॉज व्हाइल वन रिपीटेड फैक्ट फर्स्ट स्टूडेंट रिपीटेड फैक्ट द अदर अप्लाइड थिंकिंग दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग आरी माध्यम रे मु आछि इंट्रोडक्शन को इंग्लिश एसे को दिस स्मॉल मोमेंट हाइलाइट्स ए बिग क्वेश्चन फॉर इंडिया इज आवर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आंसर or to solve the real world problem. First candidate टा मेमोराइज कथा कहि बेस्ट मेमोरी बेस्ड आंसर देछि सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट कोन करछि केमिति वाटर स्कार्सिटी सॉल्व करा जाई परिबो रियल वर्ल्ड रे तार क्रिटिकल थॉट रो आंसर देछि in the 21st century as the world becomes more complex and
competitive, the debate between rote learning and critical thinking, the debate between rote learning and critical thinking. Rote learning माने सुआ भलिया घोषिकी मन रखिबो, and critical thinking becomes more important ever than ever. एठी मु बुझेइछि what is the meaning of rote learning and critical thinking. एठी बुझेइ देइछि. Rote learning means memorizing information without understanding its meaning and application. It often involves learning by repetition, like memorizing definitions, formula, and debate. Critical thinking, on the other hand, is the ability to analyze, question, reason, and come up with original ideas. It means understanding why something is true, how it works, and what can be done with that knowledge. Both methods have their place. Ditar bhi place achi. But the challenge is which one should be prioritized in the classrooms of 21st century India. एठी बुझेइछि why rote learning still dominates. काहेकि आजि पर्यंत भी rote learning इंडिया रो एजुकेशन सिस्टम रे परसिस्ट करछि. एठी बुझेइछि for decades the Indian education system has focused on exam, marks and ranks. Students are trained to perform well in the board exams and entrance tests, where correct answer matter more than innovative thinking. The system rewards memory, not creativity. आमर आजिकार जो सिस्टम अच्छी एठी क्रिएटिविटी ऊपर प्रायोरिटी दिया जाऊ नाही, एठी मेमोरी ऊपर प्रायोरिटी दिया होची. This pressure often forces teachers, students to follow a rigid curriculum with little room for discussion or exploration. The problem with rote learning रे कौन कौन प्रोब्लेम आसे. फास्ट होची लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पिला माने घोषिकी मन रखती किछि बुझिबार आवश्यकता नाही, कारण जी तो मन रखिकी आंसर लिखिला से भलो मार्क रखिबो, सेटा मु बुझेइछि. सेकंड, डिस्करेजेस क्रिएटिविटी. रोट लर्निंग टा सृजनशीलता को एनकरेज करेनी, डिस्करेज करे. आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन कथा ये कहेनी. पुअर रियल वर्ल्ड एप्रिसिएशन. रोट लर्निंग टा रियल वर्ल्ड टाको प्रॉपर्ली एप्रिशिएट करि पारेनी एवं रोट लर्निंग कौन करे स्टूडेंट रो मेंटल स्ट्रेस टाको बढ़ाई दिए. बुझे होची एवटा लिखि देइछि. तापरे बुझेइछि व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग मैटर्स इन 21st सेंचुरी इंडिया. काहे कि क्रिटिकल थिंकिंग रो इंपोर्टेंस अछि 21st सेंचुरी इंडिया रे. एठी मु बुझेइछि टुडे वर्ल्ड नीड्स innovators, not just imitators. Whether it is tackling climate change, improving healthcare, or solving social issues, the future belongs to those who can think critically and creatively. Critical thinking promotes. कौन critical thinking promote करे? Better decision making, stronger communication skill, क्यूरोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एगुड़ा सब क्रिटिकल थिंकिंग टाको प्रमोट करे. एगुड़ा लिखि देइछि तमे ताको एटा तो ऑलरेडी मु पीडीएफ देइछि देखि नबो. तापरे जॉब रेडीनेस. क्रिटिकल थिंकिंग टा जॉब रेडीनेस लगी तुमको प्रिपेयर कराए. एम्प्लॉयर प्रीफर इंडिविजुअल्स हु कैन थिंक इंडिपेंडेंटली एंड अडॉप्ट क्विकली. इंडिया's growing economy, tech industry and global presence require a workforce that is smart, skilled and adaptable, not just well memorized. Steps towards thinking based education. कौन कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा आम देश रे कौन कौन स्टेप निया हिची क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर कहिची. न्यू एजुकेशन पॉलिसी टा साबित फास्ट. न्यू एजुकेशन पॉलिसी. This policy encourages conceptual understanding, creativity and application over rote learning. It promotes project-based learning, critical thinking and flexibility in subject choices. Second, activity-based learning. Many schools are shifting towards hands-on experiments, group discussion, real-life problem solving. Third point, use of technology. Digital platforms offer interactive content, quizzes
and video that engage students better than traditional textbooks. এই ওয়েরে পুଣି ফোর্থ হলা কোন টিচর ট্রেনিং উপরে প্রায়োরিটি দিয়া হইছি workshops and courses are helping teachers develop method that inspire thinking and curiosity in classroom. तापर encouraging questions. Students are now being encouraged to ask why and how instead of just learning what. कहना what टा हला memory based. Why how जानले तमर critical thought बढ़िबो. तापर कहछि challenges कोन रहुछि critical thinking रे. Challenges to overcome. While the vision is clear, implementation is not easy. आमर जो एग्जाम सिस्टम एबे जहा अछि आम देश रे एग्जाम सिस्टम कौन अच्छी टीचर मानकर सर्टेज अच्छी टीचर माने ओवरलोडेड होके अछंती इनइक्वालिटी इन एजुकेशन अच्छी अर्बन एरिया रे बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिलला को रूरल एरिया रे मिलू नाही पेरेंटल प्रेशर रहुची आमर एक्चुअली दीटा भितर बैलेंस कथा एठी लिखिछि इट इज इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द रोल ऑफ लर्निंग इज नॉट कंप्लीटली यूजलेस. It is important to understand that the rote learning is not completely useless. Memorizing multiplication table, historical debates, it is balance kara haichi. Grammar rules is necessary at times, however it must be balanced with critical thinking. Students should not only know the answers but also understand the question behind them. Imagine a classroom where students read about pollution, then go outside to test air quality, write reports and suggest improvements. Or a science class where students build model and test their own theories. This kind of learning stays for life. एथरे स्टूडेंट टीचर और पेरेंट्स कर कौन रोल रही रोल ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड पेरेंट्स. Students must be encouraged to ask questions, explore beyond textbook, and not fear making mistakes. Teachers must act as guides, not just lecturers. They should create a safe space for discussion, curiosity, and experimentation. Parents must support learning for understanding, not just for mark. They should praise efforts, creativity, and independent thought. Conclusion को पढ़ी आस. India stands मु कहिछि conclusion ता सब बळे optimistic note रे करिवो. India stands at the crossroad माने confusion चार छकी जोटा कहंती confusion माने चार छकी. ओके सेटा से कहूछि India stands at a crossroad. One path leads to a future where students cram for exam only to forget what they learned. The other road is to leads to a future full of thinkers, innovators, and problem solvers. Young minds ready to shape the world. As we step into the 21st century, we must choose the path that nurtures not just memory but meaning. It is worthy to conclude the essay with a poem. एठी मु लिखिछि rote may win a test today but thinking lights a brighter way. Ask the how, explore the why, let's curiosity touch the sky. To lead, invent and truly glow, India needs young mind that glow. Not just to learn but to create. To shape the world and not just wait. पिला माने एमती करिकी फोर्थ क्वेश्चन टा सरै देली. तेनु 1 2 ऑलरेडी यूट्यूब रे से क्वेश्चन आंसर अच्छी 3 4 मु डिस्कशन कली. बर्तन 5 नंबर क्वेश्चन के आस. दिस इज इन फैक्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर. पिला माने
एठी कौन 5 नंबर क्वेश्चन कहूँ प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन। ए प्रश्नटा बुझीपारुच प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी निजर कल्चरल आइडेंटिटी की केमिति संरक्षित करके रखिबो इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन। सारा पृथ्वी रे बर्तमान ग्लोबलाइजेशन चलची ग्लोबलाइजेशन ने गोटे स्टैंडर्डाइज कल्चर सिंगल कल्चर डेवलप होची केमिति सिंगल कल्चर डेवलप होथिया पृथ्वी रे तमे निज निजर कल्चर को संरक्षित करके रखिबो से कथा से पचारची। ए क्वेश्चनटार अर्थ होची इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटी। पिला माने एटा को गोटे स्टोरी टेलिंग मैनर रे मु करिछि इंट्रोडक्शन। गोटे छोट पिलाटे केरलर गोटे छोट पिलाटे छोट झीटे 12 वर्षर झील ता ना होची अनया। सी कौन करिछि ना सी ता बापा माँ सह दुबई रे रहे। बर्तमान स्कूल छुट्टी हो जाइछि सी फेरीछि ता गाँ को जोठी तार ग्रांड मदर अच्छी ता ग्रांड मदर संगे से कथबार्ता होछि किंतु ताकू मलयालम भलरे जना नाही कारण से इंग्लिश मीडियम स्कूल ले दुबई रे पढ़ुछि। से स्टोरीटा को नहीं कि मो इंट्रोडक्शन करिछि। कौन देख इन ए स्मॉल टाउन इन केरला 12-year-old Anaya sat cross-legged in her grandmother's courtyard, watching her amamma. Amamma mane तार मार मा grandmother amamma weave a kasavu sari. It was onam. Onam mane amar जेमती नुआखाई होची तंकर सेमती onam. And the house was filled with the aroma of banana chips and payasam. Anaya had just returned from her school in Dubai for holidays and was more comfortable speaking English than Malayalam. She loved her grandmother but found it hard to connect with her stories and customs. कारण grandmother English जाननी मलयालम रे कहबो ये छोट झीटी 12 वर्ष झीटी इंग्लिश रे ही सब जिनस बुझी पारिबो तेनु ग्रांड मदर मार मा संगे इमोशनली कनेक्टेड हे पारु नाही। शी वुड रादर बी ऑन इंस्टाग्राम देन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स देन लर्न ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और जॉइन पुलिकाली डांस इन द विलेज। तंक गाँव रे से एरिया रे जो डांस हुए पुलिकाली। बट समथिंग चेंज दैट इवनिंग। देख सारा पृथ्वी रे आजिका दिन रे स्टैंडर्ड माने वेल टू डू फैमिली पिला माने इंग्लिश मीडियम रे पढ़ुचंती। इंग्लिश मीडियम रे पढ़िले गोटे प्रकार कल्चर पृथ्वी रे आसुची निज मदर टंग पिला माने कहि पारु नाहंती भूली जाउचंती निज कल्चर निज मातृभाषा प्रोटेक्टेड हो पारुनी प्रिजर्वड हो पारुनी एटा को मु ए स्टोरी रे बुझेछि। बट समथिंग चेंज दैट इवनिंग हर ग्रैंडमदर took out an old wooden box and showed her a necklace passed through generations, each bead telling a story. तापरे कौन हला गोटे काठ बाक्स ता माँ खोलदेला ग्रैंडमदर ताधरे गोटे कौन हार से बाहर करला बेकर जोटा नाती तापर से कहला एटा तंकर पुरुष पुरुष धरिकी ए जिनसटा नेकलेसटा ए पेड़ी रे अच्छी। दिस हर ग्रैंडमदर सेड इज नॉट जस्ट ज्वेलरीज इट इज योर हिस्ट्री। तम घर हिस्ट्री एटा तेना घर हिस्ट्री बुझिया पई हेले मलयालम लैंग्वेज बुझिबा दरकार। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हेले सारा पृथ्वी रे सिंगल कल्चर आसिले जो गुड़ा कौन अच्छी इंडिजिनस कल्चर से गुड़ा ध्वंस हो जीव सेटा मु लिखिछि। तेणु बर्तमान से कौन कहूची ग्रैंडमदर ताकू फॉर द फर्स्ट टाइम अनया सॉ हर कल्चर नॉट एज समथिंग ओल्ड और बोरिंग बट एज समथिंग लिविंग समथिंग दैट बिलोंग टू हर। दैट नाइट इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स शी सैट विथ हर ग्रैंडमदर लर्निंग ए सॉन्ग हर एंसेस्टर्स हैड सॉन्ग फॉर सेंचुरीज। बर्तमान से मलयालम गीत शुणा आरंभ कला बोलवा को आरंभ कला जहाँ तार पूर्वपुरुष माने बोलुथिले। एठी मु लिखिछि एटा हला स्टोरी माध्यम रे इंट्रोड्यूस करूछि टॉपिक की
This is not just Anaya's story, it is the story of millions around the world. As the world becomes smaller through technology, travel, and global communication, culture are blending, merging, and sometimes disappearing. This brings us to a vital question. How do we preserve cultural identity in the age of ग्लोबल होमोजेनाइजेशन होमोजेनाइजेशन कहले सारा पृथ्वी रे गोटे प्रकार कल्चर जो आसुची से केमिति आमे निजस्व कल्चर टाकू निजर संस्कृति टाकू बजाय रखी परिबा बुझै छी इठी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल होमोजेनाइजेशन refers to the process by which local cultures languages traditions start to look and feel the same influenced largely by dominant global force especially Western culture. It is most visible in fashion, food, music, language, entertainment, and even values. A teenager in Tokyo might wear jeans from an American brand, listen to Korean pop, speak in English slang, and order pizza for dinner. A child in Nairobi, Africa, might know more about superheroes from Hollywood than about their own folktale. While this kind of cultural mixing can be exciting and enriching, it also leads to loss of uniqueness, erosion of native tradition, and weakening of community bonds. Why cultural identity matters? कहीं cultural identity आवश्यकता अछि हमर आइडेंटिटी हम कल्चर रु हम पाउछंती हमर बिलोंगिंगनेस हम कल्चर रु पाउछंती हेटा बुझै छी इठी कल्चर इज मोर देन जस्ट फेस्टिवल एंड फूड it is the lens through which we understand the world and ourselves it includes language belief art music customs rituals and values passed down through generations. Preserving cultural identity is essential for several reasons. कौन कारण पाई कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्व करिया फास्ट होची सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तुम पढ़ी की मन रखिबो डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी ता लगी भी हमर दरकार कल्चरल आइडेंटिटी थर्ड होची विजडम एंड नॉलेज फोर्थ होची सोशल कनेक्शन losing cultural identity means losing all this it means replacing deep rooted wisdom with superficial trend that change every few months signs of cultural erosion as a globalization period रे केमिति सांस्कृतिक अवक्षय हो चलछि the signs are all around us कौन एठे देखा लिखि देछि fewer children learning their mother tongue traditional attires being worn only on special occasions, folk music and dances being replaced by pop culture, ancient customs being called backward, irrelevant, local cuisines being replaced by fast food chains. This shift is often subtle but steady. It does not happen overnight, but over generations or two, the impact becomes visible. The role of technology and media. Cultural erosion ने technology और media कौन role play करछंती? एठी मैं लिखी छी technology has been both a villain and a hero in this story. On one hand, global media, streaming platform, social network promote certain cultures while ignoring other. English dominates the internet. Hollywood shapes the global narratives and Western norms are considered cool and modern. On the other hand, technology also offers tools for cultural preservation. YouTube channels showcase folk music and dances. Apps teach endangered language. Instagrams and TikTok creators promote traditional crafts and clothings. Online archives and documentaries protect oral histories and stories. माने दीटा टेक्नोलॉजी कल्चर को इरोड करूची पुणी कल्चर को प्रिजर्व करूची. It is all about how we choose to use the tool in our hand.
ग्लोबलाइजेशन वर्सेस ग्लोकालाइजेशन पिला माने ग्लोबलाइजेशन कोन जानिछो ग्लोबलाइज प्लस एसन globalize means to spread an element into different parts of the world. S1 means process. So globalization refers to the process by which an idea, an information, a technology, capital, commodity, they are getting transferred from one place to another part of the world. Globalization कहले global local दीटा का मिसी गला globalization globalization ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकालाइजेशन एग्जांपल ग्लोकालाइजेशन न कहबी देख बर्तमान केएफसी इंडिया रे मिलुची आमर जदि विकलकर रसगोला न्यूयॉर्क रे मिलिबो ताहले आमे कहबा सेटा ग्लोकालाइजेशन केएफसी जेमती मिलुची इंडिया रे अफ्रीका रे विकलकर रसगोला छेनापोड़ कौटिकार नयागढ़ छेनापोड़ काकटपुर झिल्ली आनंदपुर कौन से कहती छेना मुड़की सेगुड़ा जदि पृथ्वीर विभिन्न जगह मिल ताने ग्लोबलाइजेशन लोकालाइजेशन दुटाक साइमल्टेनियसली होची सेटा मु लिखिछि ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकालाइजेशन इंस्टेड ऑफ fighting globalization, we can embrace globalization, a term that combines global and local. It means adopting global trend to local culture instead of replacing them. For example, fashion designers mixing modern styles with traditional textiles. तापरे नेक्स्ट लिखिछि restaurants serving fusion food that respect both cuisines. Schools offering international curriculum but also teaching local history, literature and language. Tech product with interfaces available in regional language. Globalization respects the global connection but celebrates local uniqueness. What can be done? कौन करा जिबा दरकार कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्व करिया पाए फैमिली आउ कम्युनिटी तरफ एफर्ट रहिबा दरकार स्कूल आउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रोल रहिबा दरकार सपोर्ट फॉर लोकल आर्टिस्ट एंड आर्टिसान एक कथा रहिबा दरकार आज आमर जो सब प्रोजेक्ट हेची वन स्टेशन वन प्रोडक्ट सेगुड़ा सब तार यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड टेक्नोलॉजी तार अब्यूज हे पारे प्रॉपर यूज हे पारे हमें प्रॉपर यूज करिया दरकार Young people love digital world. Let us use it to revive and promote culture. Podcast in native language, YouTube channels about traditional crafts, Instagram pages featuring village life. All these can make culture cool again. Policy and government role. कही देइछि already one station one product. हला India's rich tapestry at risk. एटा ही लिखी देख इंडिया इज ए लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस ट्रेडिशन बिलीव्स फ्रॉम मणिपुरी डांस टू मराठी फोक सॉन्ग फ्रॉम तमिल लिटरेचर टू काश्मीरी सॉल्स एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया हैज समथिंग यूनिक बट इवन हियर ग्लोबल होमोजेनाइजेशन इज क्रीपिंग इन इंग्लिश इज overpowering regional languages. Malls are replacing local market and social media trends are replacing traditional values. Yet, India has a great opportunity. Its people are proud of their culture. With the right efforts, it can be preserved. Even in modern times, Indian youth especially must realize that knowing the latest memes trend is fun, but knowing your grandmother's story is priceless. Conclusion, optimistic note रे conclude करछि पिला माने कौन कहछि the world is becoming one village. Yes, but even in a village every house has its own flavor, its own food, its own laughter.
सारा पृथ्वीटा गोटे भिलेज हो जाइए कि भिलेजटारे कौन होमोजेनिटी अच्छी प्रत्येक घर रोसई कर तरीका अलग प्रत्येक घरे अलग अलग तरकारी रोसई हुए सेम डे रे सेटा मु कहूँ बट इवेन इन ए विलेज एव्री हाउस हैज इट्स ओन फ्लेवर इट्स ओन फूड इट्स ओन लाफ्टर let us not become so global that we forget who we are. Let us learn to dance with the world without losing the rhymes of our own heartbeat. Let us carry our culture not as a burden of the past, but as a badge of honor, a treasury of identity, and a gift to the world. It is worthy to conclude with a small poem. छोटो poem रे conclude करछि in the songs they sang, in threads they wove, in stories told beneath the grove. Our roots run deep, our colors shine, a tapestry, both yours and mine, both yours and mine. Let's say, winds of change blow wild and free, but hold your roots like old oak tree, for your culture bold and true leaves the timeless soul of you. पिला माने एमती पांचटा एसे वर्ष पढ़ी पांचटारू एक दुई एसे ऑलरेडी यूट्यूब रे मु आगुरु डिस्कशन कर देइथली 3 4 5 जो प्रोबेबल क्वेश्चन देइथली सेथरु पढ़ी एवं तार आंसर विथ रिटन फॉर्मेट मु तुमको देइदेली स्टडी आईक्यू तरफरु मु मे मास फास्ट वीक रे आरंभ करुच्ची सोशियोलॉजी ऑप्शनल इंग्लिश एसे पेपर जीएस पेपर 4 दैट इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जदि तुम मानकर किछि क्वेरीज अच्छी स्टडी आईक्यू को लेकिन ताहले ये जो वीडियो देखुच ए वीडियो तले गोटे अच्छी मेसेज देवाई स्पेस से देखिबो स्टडी आईक्यू रो गोटे लिंक अच्छी से लिंक उपर क्लिक करदेले आमर नंबर से अवेलेबल हम सो यू कैन डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विथ स्टडी आईक्यू बाय कॉलिंग टू दैट नंबर ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वंस अगेन